Hello, my dear students. Some people dream of success while others wake up and work hard for it. So let's work hard for this learning process. And आपके इस learning journey में मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for this session. इस सेशन में बात करेंगे फंक्शन टॉपिक के रिलेटेड ही, बट एक बहुत प्रिमिटिव टॉपिक को खत्म करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस. एंड यहाँ पे बहुत जेन्युइन इनसाइट्स पता चलने वाले हैं जो हम लोग डे वन से यूज करते आ रहे हैं. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी एंड सी प्लस प्लस. So when we go against type of functions, so functions are mainly divided into the two types. One is known as predefined functions, predefined functions. And the other one is known as user defined functions. Right. So obviously the name itself indicate predefined, जो पहले से define हो चुके हैं. And now we know what are the three stages of life cycle of the functions: declaration, definition and call, right? So जो predefined functions है, those predefined functions are already declared and defined, right? So these are already declared and defined in header or library files, in header or library files, right? Generally उसको कहते हैं .h file और .leaf file, right? So ऐसे फंक्शन जो पहले से डिक्लेयर डिफाइन करके रखे हैं इन फाइल्स नोन एज हेडर फाइल्स और लाइब्रेरी फाइल्स, राइट? जनरली वो इंडिकेट होते हैं .h एक्सटेंशन से या .lib एक्सटेंशन से, राइट? ओके, सो कहां पे इनको यूज किया? प्रोबेबली our first interaction with the C programming is we are using stdio.h and उस समय मैंने कहा था कि हम लोगों को अगर printf and scanf को यूज करना है तो we need to go on using stdio.h. तो वहां पे हम लोग उसके बहुत सारे डिटेलिंग्स में नहीं जा पाए थे बिकॉज दिस वाज अननोन, राइट? सो डेनिस रिची ने ऐसे कुछ फंक्शंस ऑलरेडी डिक्लेयर डिफाइन करके एज अ प्रोग्रामर आपके लिए यूज करने के लिए दिए हैं एंड दोज फंक्शंस आर जनरली डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इन हेडर फाइल्स और लाइब्रेरी फाइल्स. तो जब हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करते हैं जो कि किसी हेडर फाइल में या लाइब्रेरी फाइल में है, तो उनको अगर प्रोग्रामिंग में यूज करना है तो यू मस्ट टेल इट टू द कंपाइलर दैट डियर कंपाइलर, आपको इन फंक्शंस के जो मैं यूज कर रहा हूं, जो जिनको मैं कॉल कर रहा हूं, उन फंक्शंस के डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन इस हेडर फाइल में या इस लाइब्रेरी फाइल में मिलने वाले हैं. एंड वो चीज आप करते हो विद द हेल्प ऑफ हैश इंक्लूड. किसके साथ करते हो? हैश इंक्लूड. तो ये हैश इंक्लूड क्या है? So this particular hash include entity in programming is known as preprocessor directive. क्या कहते हैं इसको? Preprocessor directive. So what do you mean by directive? ऐसा entity जो किसी चीज को डायरेक्शन दे. So this preprocessor directive is directing to the compiler that जिन फंक्शंस को इस प्रोग्राम में कॉल किया गया है उसके डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन अगर प्रोग्राम के अंदर नहीं मिल रहे तो जाके ढूंढो किसमें? इस हेडर फाइल में. सो इस हैश इंक्लूड के बाद हम लोग जनरली एंगल ब्रैकेट्स में लिखते हैं व्हाट .h फाइल एज अ हेडर फाइल का नाम. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यूज किया अभी तक stdio.h, conio.h, string.h, math.h, ऐसे अलग अलग हेडर फाइल्स को यूज किया, राइट? ओके, सो यहाँ पे अगर प्रोग्राम में कुछ ऐसे फंक्शंस है जिनके डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन उस प्रोग्राम में नहीं है तो कंपाइलर लुक्स इनटू this particular header files. So hash include is preprocessor directive. So sometimes it is a very first question in our exam or viva that what is this hash include is. तो वो वैसे ही लिखना है, that is not the proper answer. The proper answer is, sir, hash include is a preprocessor directive where we are telling it to the compiler that
इफ यू गेट सम ऑफ द फंक्शन जिनके डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन मेरे प्रोग्राम में नहीं किए हैं, तो यू मस्ट सर्च इट इनटू द डॉट हेडर फाइल और डॉट लीव फाइल. सो वेरी इंटरेस्टिंग एंटिटी, प्री डिफाइंड फंक्शन जिनको पहले से ही डिक्लेयर एंड डिफाइन करके रखा है. एंड द नेक्स्ट कैटेगरी कम्स इज व्हाट, यूजर डिफाइंड फंक्शन. सो एज अ प्रोग्रामर आई हैव टू डिक्लेयर द फंक्शन, I have to define the function as well as calling तो हमको ही करना है, call to the function done by what, programmer. So पिछले सेशन में जो हम लोगों ने डिस्प्ले फंक्शन लिखा, जो हम लोगों ने डू एडिशन फंक्शन लिखा, that was user defined function. एंड पिछले उसी प्रोग्राम में जो हम लोगों ने CLR SCR यूज किया, जो गेट CH यूज किया, जो printf यूज किया, those are what, predefined function. So these are the very two interesting types of the functions जहां पे कुछ functions already define करके रखे हैं, and there are some functions we write according to our need in development जहां पे हम लोगों को उन functions के declaration definition खुद को करने पड़ते हैं. And we have seen the very genuine rule is एक function के अंदर दूसरा function define नहीं होगा. And let me show you what are the different header files that we have and how we can go on selecting the function. Already हम लोग ये देख चुके हैं, right? But as we are discussing right now predefined and user defined function, it is a time to see those header files in which there are various functions that are declared and defined. So let me show you some of the predefined functions that are declared inside header files. So we are back into the turbo C and यहाँ पे I'll go on using form.c file, right? इसी फाइल को अगर हम लोग ध्यान से देखते हो तो हम लोगों ने hash include 2 बार यूज किया है, right? Okay, why this 2 times use of hash include? Because, and what is hash include by the way? Just I mentioned that hash include is a preprocessor directive which tells the compiler that आपको इस प्रोग्राम में ऐसे कुछ फंक्शन दिखेंगे जिनके डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन आपको ढूंढना पड़ेगा stdio.h में एंड conio.h में, राइट? तो यहाँ पे CLR SCR get CH मैंने यूज किया है, those are declared defined inside what, conio.h. So let us observe conio.h. तो हेल्प में चलते हैं, इंडेक्स में हम लोग conio.h को देखते हैं, राइट? ओके, एंड दिस इज conio.h एंड ऑब्जर्व करो conio.h में we could be able to see some of the functions that are already declared and defined. So this function is getCH function, right? Okay, as well as CLR, SCR. Other functions are also declared and defined over there. So इन function को जो पहले से ही declared and defined करके रखे हैं, उनको अगर use करना है, तो as a programmer we need to use preprocessor directive known as include, hash include, right? Okay. So let's see one more file that we use over here, and that is index में चलते हैं stdio.h, right? So stdio.h, right? Okay. जहां पे आपको दिखेंगे printf and scanf, right? So please observe, this is a printf function and let's search for scanf function. Okay, this is what, scanf function, right? Okay. So this we use massively in the coding and अभी हमको पता चल रहा है कि why we are using hash include stdio.h, hash include conio.h, and many of the times we go on using different header files. And if you observe, let us say math.h bhi hai, right? Many functions are there related to what, mathematics operations, and then we can go with string.h, all string ke functions are also there. Then we have n number of files are there which are helping us with the help of what, predefined functions. So that's it for this session. I hope you understood two important types of the function. One is predefined function, other one is user defined function. User defined function बहुत simple है. User defined functions are declared, defined and called by the user only. एंड प्रीडिफाइंड फंक्शन का डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन एक तो हेडर फाइल में रहेगा, नहीं तो लाइब्रेरी फाइल में रहेगा, जिसको हमको अगर प्रोग्रामिंग में यूज करना है, कॉल करना है, तो वी नीड टू यूज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड, राइट? इस सेशन में इतना ही रखते हैं. आई होप कॉन्सेप्ट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर. कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच.